1 degree is equals to this radian also. So I can compare these two things from here, and I can say from these two equations that 60 degree is going to be equal to this amount of radians. So now I can write it like 60 minute is equal to this much amount of radian, or 1 minute is equals to, beta वही आपका unitary method, this 60 minute is equal to this. So 1 minute will be this amount by 60. 60 आपका divide में पहुंच जाएगा. So when you will be dividing this 1.745 with 60, so you will be having this over there. 1 minute is equals to this amount of radian. और अगर आप इसे राउंड ऑफ करें 2 डिजिट तक आफ्टर डेसिमल, सो यू विल बी हैविंग 2.91 into 10 raised to power minus 4 radians. Okay, so this is the value of 1 minute. Similarly, you can have for 1 second. As you have seen that this is equal to 1 minute. Also 1 minute is equals to 60 seconds. So eventually 60 seconds will be equal to this, and 1 second will be having this much amount of value. Khushi and Shalini, any confusion, any query? No, ma'am. No, ma'am. Shalini, okay, bachche? Yes, ma'am. Okay. So we will be following from this portion now. Means now I am able to convert into the radian wala portion. So we will be looking up for this numerical further just to have the better like way how we will use it. So in our classes, I have like either so you convert the degree into the radian directly, or you can do one thing like from degree you can go to minute first, then from minute you can go to seconds also, and then from seconds you can go to the radian values. Choice is yours कि आप कैसे convert करना चाहते हैं. आप कैसे भी convert करेंगे, your answer is going to be same. Okay, so now you have to keep focus on the question. This is the question which is involving this solution, and it is involving the parallax method also. Moon is observed from two diametrically opposite points A and B on Earth. Beta, your points are on Earth, and diametrically opposite means along the diameter of Earth, they are at the extreme ends of the diameter. Okay, and you are observing the moon, so your planetary object is moon. Okay, now the angle subtended at the moon by the two direction of observation is 1 degree 54 minutes. Angle subtended by two directions of observation. These are the two directions of observation. This is the first direction of observation. This is the second direction of observation. And here the angle subtended by these will be, which is given in the question is 1 degree 54 minutes. Okay, beta, theta is given 1 degree 54 minutes. Now you are given the diameter of the earth to be about this. So diameter means this value is given, basis is given to you, and you have to calculate the distance of the moon from the earth. आपको ये distance d find out करना है. Obviously beta, as I told you, theta is equals to L upon R is going to work in this situation. आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको R निकालना है, इस मीन्स आपको D फाइंड आउट करना है. तो आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा L अपॉन थीटा. L मुझे गिवन है सिचुएशन में, डायमीटर आई एम गिवन, थीटा इज ऑल्सो गिवन, बट थीटा जो मुझे गिवन है वो डिग्रीज में गिवन है. तो ऑब्वियसली my distance is in meters, which is SI system, but my angle is in degree, which is not the SI system. And I have seen this from my lower classes that I have to convert these things first into a same system. So I will convert this 1 degree 54 minute. Beta, you can see that complete angle is neither in degree nor in minute nor in seconds. It is involving both minute भी और seconds भी, minute भी और degree भी. तो आप क्या करेंगे, इसको एक सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे. As you know, जब आप आर से मिनट्स बनाते थे 9th क्लास में, तो यू कन्वर्ट 1 hour 15 minutes. हाउ मेनी मिनट्स विल बी देयर बेटा इन दिस? कन्वर्टेड प्लीज. 1 hour 15 minutes. 75 minutes. कितने? 75 minutes. 75 minutes. Yes, 75 minutes. What you have done? You have simply taken 60 minutes of 1 hour, है ना? And those 60 plus 15, simply I will be converting this. 1 degree involves how many minutes? Just now I told 60. So those 60 plus these 54, how many minutes it will be beta? 114.
है ना? So either तो direct you multiply 114 minute with minute वाला radian value, this one, okay? Or as they have done in the book, what they have done? They have converted from minutes to seconds, and then with the value of the radian of seconds, they have multiplied here. So either you choose to be in the second, then to multiply with the radian of the second, or you directly multiply this 114 with 2.91. In both the cases you will be having the same answer बेटा. ठीक है, तो आप सेकंड्स पे जाके एक स्टेप बढ़ा के बुक की तरह भी कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट मिनट्स से भी अपने रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. आपका कोई मार्क्स कट नहीं होगा, ठीक है, बट आपका वैल्यू ठीक होना चाहिए. कभी लड़ते रहो कि नहीं मैम मैंने ठीक किया, आपकी वैल्यू भी करेक्ट होनी चाहिए, जो आप वैल्यू वहाँ पे प्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए. ठीक है, तो आपका कन्वर्जन के बाद व्हेन यू विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू रेडियन, सो दिस विल बी योर आंसर फॉर थीटा, दिस इज योर आंसर फॉर बेसिस, and now you will be putting it into the formula, and this will be your final answer of the situation. Can anybody tell me here what is basis? Now let us start difference between the 2 points of observation. अमोल तेरा मुझे ना माइक म्यूट करना पड़ेगा. बेटा तुम मत बोला करो, मुझे मालूम है तुम्हें काफी चीजें आती हैं, आई नो अबाउट इट, बट कभी कभी ना दूसरों को भी मौका देने दिया करो. ठीक है, गुड. द डिस्टेंस बिटवीन, दोबारा बोला, क्या बोला तुमने? डिस्टेंस बिटवीन 2 points of observation. ओके, पक्का? कोई इसको करेक्ट करना चाहता है? किसी को लगता है इसमें करेक्शन चाहिए? एनीबॉडी? नो? किसी ने कुछ भेजा है? एक सेकंड. अच्छा नो मैम, ठीक है, चलिए. एंड व्हाट आर दोज ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स इन द पैरेलैक्स मेथड? फॉर एग्जांपल बता सकते हैं? Left eye and right eye. Left eye and right eye, exactly. Anybody knows about the distance between our left eye and right eye? आज इंच टेप लेके बैठ जाना घर में, ठीक है, मेजर करना. कोई पूछे तो बता देना मैम फिजिक्स, मम्मा फिजिक्स वाली मैम ने होमवर्क दिया है. मेजरमेंट ऑफ लेंथ गूगल कर ले. क्यों गूगल कर लो भाई, मेजरमेंट ऑफ लेंथ का कॉन्सेप्ट है, आपको लेंथ मेजर करनी भी तो आनी चाहिए ना. फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कहीं अप्लाई भी कर लो प्रैक्टिकली लाइफ में, हर चीज गूगल कर लो. चलिए, तो एक क्वेश्चन आपका डन हो गया है रिलेटेड विद द पैरेलैक्स. सेकंड इज रिलेटेड विद द साइज. साइज के लिए आपका एग्जांपल 2.4 इज द बेस्ट वन, आई थिंक सो. एंड एज इट इज एग्जांपल, तो आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम आना चाहिए, तो इसको ट्राई करेंगे सारे बच्चे. अमोल प्लीज पहले आंसर मत देना बेटा, मैं आपसे पूछ लूंगी बाद में अपने आप. द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड्स. इसमें आप कन्वर्जन भी कर पाएंगे, ठीक है. मैं स्क्रीन पे छोड़ दे रही हूँ कि आपको अभी वैल्यू अगर याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बट बेटा हमेशा आपके पास ये स्क्रीन नहीं होगी, तो प्लीज लर्न द वैल्यूज, ठीक है. आप लोग बहुत लाइट ले रहे हैं अपने सब्जेक्ट को, एक्चुअली ये इतना लाइट नहीं है. इट इज द टफेस्ट सब्जेक्ट आई कैन से. Okay, so please start studying on a serious note. The distance d of the sun from the earth is this. You have to calculate the diameter of the sun. Can you see? Previously our diameter was on earth, but now our diameter is on the sun. The diagram is reversed actually, beta, as I was telling you in the PPT. So right now this is your observation point, and this is the diameter of the sun that you have to calculate. You are given here angular diameter. So sometimes na children got confused and they think that this value of the diameter is given as 1920, but it is written over there with the word diameter, angular diameter. So I told you over there when we were on the PPT that alpha is the angular size or angular diameter for the object. So यहाँ पे alpha का value आपको 1920 given, ठीक है. This value 1920 is belonging to the alpha in this situation. And this value is given to you for the distance, means for this particular value. So please beta